So this is the question number 8 from CBSE sample paper midterm 2021, and this question comes under the topic class 11th Python revision, and the question goes like this: out of the given option you need to tell which option is gives the correct return type of the input function. So you have been asked what is the return type of the input function. अगर आपने थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग करी होगी क्लास 11th में, तो यू माइट हैव रिमेंबर दिस सिंटेक्स int input एंड दिस वन. तो इस सिंटेक्स के अंदर क्या है, बेसिकली वी आर ट्राइंग टू गेट द एन इंटीजर वैल्यू फ्रॉम द यूजर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक ए लुक एट द इनपुट फंक्शन इन पाइथन का सिंटेक्स क्या है. तो बेसिकली व्हाट इज द इनपुट फंक्शन सिंटेक्स इज, कोई भी आप फंक्शन लेते हैं, उसके अंदर क्या करते हैं, कोई प्रॉम्प्ट डालते हैं. जैसे आप कहीं एटीएम में गए तो एटीएम में आपसे बोलता है ना एंटर योर पिन, तो फिर इट इज आस्किंग योर फॉर इनपुट. तो सिमिलरली व्हेन वी आर यूजिंग इनपुट फंक्शन वी कैन प्रोवाइड ए प्रॉम्प्ट टू द यूजर कि उस हम क्या काम एग्जैक्टली करवाना चाहते हैं. ठीक है. एंड देन जो भी वैल्यू आएगी उसको हम रिसीव करेंगे वेरिएबल में. ठीक है. तो पाइथन के अंदर अगर बात करूं तो इनपुट फंक्शन ऑल यूजर इनपुट कैसे एक्सेप्ट करता है एज ए स्ट्रिंग. ठीक है. यूजर चाहे नंबर डाले चाहे कुछ भी डाले, पर वो पाइथन कैसे इंटरप्रेट करेगा उसको एज ए स्ट्रिंग. देन अगर आप जैसे मैंने पिछले उसमें बात करी थी कि हमने क्या करा था इंट इनपुट, तो फिर क्या करता है उसको इंटीजर में कैसे वैल्यू मिलती है हमें वेरिएबल एन की, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि जो आपने इनपुट फंक्शन लिया वो क्या आया, वो तो स्ट्रिंग वैल्यू दी, लेकिन आपने क्या करा उसको एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट कर दिया किस में, इंटीजर में, विद द हेल्प ऑफ इंट फंक्शन. हेंस सो द करेक्ट आंसर वुड बी, द रिटर्न टाइप क्या है इनपुट फंक्शन का आपका, स्ट्रिंग. ओके. तो करेक्ट आंसर वुड रिटर्न टाइप वुड बी स्ट्रिंग. So if you wish, you can also cross check in your Python IDE. Let's say for an example, हमने इस केस में क्या करा, एक स्टेटमेंट ले ली L1 equals to इनपुट करा लिया कुछ, and then we try to find out the data type using type function. So you can see here it is a string data type. Okay. Now coming back to our question, the correct answer would be the string one. Since it is a fairly easy question, I don't think it will comes into your exam, but still you should have remember. आपको पता होना चाहिए कि रिटर्न टाइप क्या है इनपुट फंक्शन का. तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, यू नीड टू टेल इन द कमेंट बॉक्स व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ द प्रिंट फंक्शन. In this question, we discussed about the return type of input function. Now it's your call to tell us about the what is the return type of the print function. Okay. So guys, that's it for the day. I hope you learned something new today. If you have any doubt, feel free to ask in the comment box.